you can get a lot of runs. There could be a possibility of a due as well. Remember, Rashid Khan hasn't been at his absolute best like the previous season, so they would want to get as many runs as possible. When we talk about both the teams as well, a very interesting player on the show today, that's Karthik Tyagi. I don't know how many of you guys know Karthik Tyagi and how many of you guys have watched Karthik Tyagi before. But remember, Karthik Tyagi has had a great domestic season, great UP Premier League, and he's a guy who came with a lot of hype coming into this IPL as well. Unfortunately, he did not play a lot of matches initially. He's making his Gujarat Titans debut here. But can you guys let us know in the comments, or join us on the call and let us know what do you think about today's match as well. You can join in if you're watching. Remember, it's going to be so much of fun interacting with you all in today's game. Just talking about today's game as well, because remember, two big teams. Why I say big team? Because they are the finalists of last year's IPL. You saw what happened when last time around when CSK chased down the target in the same ground. Jadeja, there was even a video which came out last evening from the CSK handle about Jadeja trying to recreate the moment. But 44 and 4.3 overs, not a bad say so from the Gujarat Titans. One of their better starts in this year's IPL. I have Simran joining me. How are you doing, Simran? How is this game going on for you? Yeah, it's good, and GT is looking good. I think they will try to win today. I think this is the last Absolutely. time GT. I agree. Last time, remember, Simran, when we came for live, the game got over pretty early. I hope that's not the case this time around. I hope the game stays for a little more longer, and I hope we get to see a full batting innings where GT plays well. And there was some power pack batting as well. Interesting, Simran, that they have dropped Ridhiman Shah and brought Sai Sudharsan as an opener in today's game. Yeah, yes. Uh, I think it's a मुझे ऐसा लगता है कि आज ये डिसीजन अच्छा है जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है लाइक ही इज प्लेइंग रियली रियली वेल अभी 22 रन भी बना चुका है और 18 बॉल में वो भी हर बॉल पे सिंगल जी. ले रहा है इट्स अ गुड डिसीजन व्हाट डू And यू I थिंक think this also helps Shubman also to play a little more freely, I believe, to have a left right combination going. And, at least Shubman can play a lot more freely in this case because with Ridhiman, there was a wicket falling in almost every power play. Now, that being sorted out, I think, this is going to be a lot more easier for Shubman. And Shubman is looking really good. Let's be honest about it. It's one of the better he has looked initially in this IPL. बिल्कुल आज आज शुभमन गिल को देख के ऐसा लग रहा है कि वो उतरे ही है कि ताकि हम लोग जीत पाए एक ज्यादा से ज्यादा रन वो बनाने का कोशिश करेगा क्योंकि आज आई थिंक जितना मैंने सुना देखा आज जीटी का लास्ट चांस है अगर यहाँ से ये आज का मैच हारता है तो ये बाहर है एक एलिमिनेट आई हाँ, थिंक जी बिल्कुल। यस और ई ई लग जाएगा उन लोगों के नाम के साइड में और वो नहीं चाहिए। कल पंजाब का पंजाब भी हार के ही लग गया था, एलिमिनेट हो गया था। और आज का मैच काफी महत्वपूर्ण लगेगा लगेगा स्पेशली जीटी के लिए, क्योंकि उन लोगों का नेट रन रेट भी काफी नीचे है इस टूर्नामेंट में। -1 पे है और दैट्स अ वर्स्ट नेट रन रेट फॉर अ टीम इन दिस टूर्नामेंट, एंड सो दे वुड वांट थिंग्स टू रियली गो वेल फॉर देम। Simran, just wanted to ask you this point of view. Now GT has had a very very ordinary season. आपको लगता है कि शुभमन गिल के ऊपर कैप्टेंसी का दबाव है इस वक्त? उसी वजह आई से शुभमन गिल का बैटिंग का प्रदर्शन भी काफी नीचे आया है। शुभमन गिल नॉर्मली जब खेलता है तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी और पावर हिटिंग दोनों को मिला के इज प्रिटी गुड बैटर बट जैसे ही कैप्टनसी का थोड़ा सा प्रेशर आया तो क्योंकि इतना प्रेशर क्यों आया वो भी एक बात है क्योंकि लास्ट टाइम जीटी कप उठाया था राइट लास्ट या लास्ट का उसके फाइनल फाइनल में आए थे, हाँ। पिछले साल हाँ फाइनल में आए थे, लास्ट बॉल में हारे थे, उसके पहले तो चैंपियंस थे। चैंपियंस थे तो लाइक लगातार वो लोग टॉप की टीम रह चुके हैं तो इसी वजह से अभी गिल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर बन गया कि मतलब आई थिंक इसी वजह से इस लाइक अच्छा नहीं खेल पा रहा है इस सीजन में एब्सोल्युटली। और आप देखिए तो इस स्टार्ट के बाद मेरे को लगता है कि बिल्कुल जीटी को कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत देर बाद इतने अच्छे स्टार्ट मिला है जीटी को। आई पर्सनली थिंक इफ शुभमन कैन प्ले अंटिल 15 ओवर्स, दिस कैन बी अ गुड स्कोर फॉर जीटी। यस यस बिल्कुल बिल्कुल और शुभमन गिल 50 तो आई थिंक मना ही देगा जिस तरीके से जा रहा है अगर गलत गलत शॉट नहीं खेलेगा तो आई थिंक दोनों का देखिए आप रन जो है 11 बॉल में 22 19 बॉल में 23 अच्छा जा रहा है इट्स प्रीटी गुड और फिर भी आप इस साल के आईपीएल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी काफी स्लो लग रहा है, 8 का रन रेट। पर हाँ,
obviously, they would want to really step up from here on with these two batters, especially Sai Sudarshan. He's got the ability, right? Remember last time around he played against Chennai in this ground was the IPL final where he scored 96 runs. I think memories to acha hai, and he plays spin really well as well. So that's going to be a very important factor for the Gujarat Titans here, isn't it? यस और मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल आपको लगता है कि शुभमन गिल सॉरी शायद सुदर्शन थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है डू यू थिंक अंडररेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, पर मेरे को लगता है अभी भी वक़्त है। इस फॉर्मेट में अभी भी क्रैक नहीं किया है। आई थिंक ही इज़ गॉट द टैलेंट, ऑब्वियसली तो है, कंसिस्टेंसी तो है, बट आई थिंक ही हैज़ टू इम्प्रूव मे बी लिटिल बिट ऑफ पावर गेम एज़ वेल। लाइक अभी 25 रन्स बनाया है 20 बॉल्स में। अभी आउट हो गया तो नेगेटिव इम्पैक्ट इनिंग्स हो गया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समटाइम्स वी गॉट Shalvin say या Gill is 100. I mean, let's be honest, Shalvin, we all love Gill, right? We all love Gill. Shalvin, we are absolutely loving what Gill is doing for GT and also for India. What he's done for GT, not this season especially, but what he's doing for India as well. Hopefully, it's a big night for Gill. He loves playing in this ground. But yeah, मैं साई सुदर्शन के बारे में बोल रहा था. I personally think, साई सुदर्शन का T20 गेम अभी भी is a work in progress. Like अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा बन सकता है. अभी भी he's what 22, 23. He's very young. And I'm sure he's a player for India for sure. You saw that in that one day series he played in South Africa. I think 350 बनाया 3 मैच में. He's that good. So he's someone we all have hopes on. आपको क्या लगता है सोया सुदर्शन के बारे में? What is your honest opinion on it? या मुझे ऐसा लगता है कि शायद साई सुदर्शन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड प्लेयर है मतलब ही नोज कि कब रन लेना है कब कौन सा शॉट खेलना है तो भरोसा कर सकते हैं मतलब ट्रस्टवर्दी प्लेयर है कि जैसे कि हम लोग सोचते थे ना पहले जैसे कि युवराज आएगा तो युवराज कुछ 30-40 रन बना के जाएगा मुझे ऐसा फील होता है साई सुदर्शन से अगर मारेगा नहीं अगर हार्ड हिट नहीं भी करेगा तो भी एटलीस्ट वो कुछ रन तो देके जाएगा और फालतू में अपना विकेट गवा के नहीं आएगा आई थिंक लाइक दैट ऐसा फील होता है Absolutely. Absolutely. एक टेक्निकलिटी में तो काफी अच्छा है वो अच्छा खेलता है मतलब ही हैज गॉट सॉलिड टेक्निक ही इज समवन फॉर द लॉन्ग रन एज वेल मेरे को लगता है कि मे बी यू नेवर नो Shalvin says yes, we all love Gill, but yeah, I think somewhere down the line you might see Sai Sudarshan open batting for India as well in all three formats is what I believe. Abhi it's very early, obviously, Yashasvi and Gill as well, so it's tough for him, but he can bat number 3 as well. So that's a good thing about Sai Sudarshan. Even Test cricket, मेरे को काफी अच्छा लगता है वो Test cricket में तो number 3 खेल सकता है. I don't know what's the prospects of it, but let's hope. What a shot from Gill! He has played that over long on, and that's a beautiful six. What a way to end the power play. There's a question going on there, guys. Can GT score 62 runs at the end of power play? आपको क्या लगता है सिमरन? बन पाएगा कि नहीं? 62 runs, I think five uh, 5 run, one ball, right? 5 run 1 ball, yeah. एक और Uh, छक्का. no, I'll go with no. Okay. If you have said no, it's fine. I mean, that's a safe option. If you want to take a little more risk and say yes, it'll be always fun. But yeah, but Simarjit Singh bowled really well against Punjab Kings. Right, he was bowling with good pace as well. And how Yeah. much do you think Pakirana's injury is going to affect Chennai now going into the back end of the tournament? Obviously, अगर यॉर्कर का मतलब यॉर्कर सेक्शन का बात करें तो या इट विल डेफिनेटली मतलब कुछ लॉस तो हुआ है या चेन्नई को लेकिन और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं तुषार देश पांडे अभी अच्छा कर रहे हैं तो आई थिंक सी अगर पिच ही ऐसा हो कि ज्यादा आप रन बनाओगे तो चेन्नई के पास भी बैटर है राइट जी बिल्कुल बिल्कुल है तो obviously. यस और चेन्नई आई थिंक टॉप 4 में भी है राइट अभी फोर्थ पोजीशन में है. आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा चेन्नई के लिए क्योंकि बिकॉज दे विल बी प्लेइंग आरआर एंड आरसीबी नेक्स्ट. इफ दे लूज टुडे they can only end up with 16 points and they can't afford to lose one more match after this because there are teams who are going to collide at 14 points. हम इसके बारे में बात कर रहे थे पिछले मैच में भी. शायद 14 कट ऑफ हो सकता है and there will be teams like RCB who just won 4 games in a row and they will have a game against RCB. Who knows, this could be, I'm predicting a virtual knockout game between CSK and RCB on the 18th in Chinnaswamy क्योंकि you never know if CSK lose this match or the next match, then it's going to be a virtual knockout on 18th against 18 या RCB. हाँ या And that's going to be a crazy game. If RCB also wins against DC and CSK goes on to lose one of these 2 matches, that's going to be a blockbuster game before the playoff.
And that's, I think, the last game before the playoff as well. So the playoff begins way before the playoff should actually begin. So I'm excited for that, Simran, personally. या यस आई थिंक सबको यही सोच रहा है जो आपने बोला ना अभी कि अगर सीएसके 2 मैच हारता है फिर उसके बाद आरसीबी के साथ नॉकआउट में खेलेगा तो आई थिंक वी ऑल आर होपिंग फॉर दैट कि वही हो ताकि फाइनल के पहले फाइनल दिख जाए हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल, and that's another shot from Gill. और एक क्वेश्चन चल रहा है अभी, what do you guys think, can Gill score 50 today? Simran, your thoughts? I think yes. या यस इज ना लाइक Absolutely. लुकिंग रियली रियली गुड टुडे आज फुल मूड में लग रहा है कॉन्फिडेंस कप्तान गिल, या अच्छे मूड में लग रहा है, and I think he has to capitalize on this. Remember last time around, when these two teams played in the same ground, it was the IPL final, and Shubman Gill was looking even mood that day, but it was some crazy something from MS Dhoni which took him out that night. And it was Sai Sudharsan who went on to score a beautiful 96 that night. And remember, आज के मैच में even Matthew Wade is playing, and also Rachin Ravindra has been included in Chennai Super Kings squad. सचिन रविंद्र के बारे में क्या लगता है, क्योंकि अच्छे स्टार्ट तो दिए थे चेन्नई के लिए पहले 2 3 मैच में, उसके बाद काफी फॉर्म नीचे भी आया एंड सीएसके डिड नॉट ट्रस्ट हिम मच. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट ही कम्स गुड, राइट, स्पेशली गोइंग इनटू द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट. हाँ आई थिंक he'll प्ले गुड टुडे क्योंकि यू नो वर्ल्ड कप आ रहा है अभी सो अभी अभी पिछले लास्ट के कुछ मैच में ना सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं इफ यू सी जी बिल्कुल. स्टार को देख लो आप और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि लास्ट कुछ मैच में आईपीएल में अचानक से वो लोग थोड़ा ज्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं पता नहीं कैसे जी बिल्कुल. वर्ल्ड कप इफेक्ट होगा. प्री वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप इफेक्ट. दे नीड प्रैक्टिस तो चलो यहाँ पे आ जाओ आईपीएल खेल लेंगे आईपीएल में तो अच्छा खासा सब कुछ मिलता है पैसे के साथ साथ जी फेम बिल्कुल. और गेंद भी मिलता है मारने के लिए सो जी. आई थिंक यस And I think some players will really say that for us, IPL has also, a lot of players. For example, Tristan Stubbs in matter got selected in the South African T20 team straight away from the IPL. सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से. And that's a good thing, right? I mean, there are a lot of players like Jake Fraser McCur के बाद चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में. Unfortunately, he didn't get selected, but I'm pretty sure that he'll be one of the reserves for the World Cup as well. खुदा ना खासा यस कोई injury ना हो, but if there's an injury, I think Jake Fraser McCurk will be the preferred option. And I'm excited. I am for the future of Australian cricket. Travis Head और Jake Fraser McCurk काफी. Oh, that's an overthrow. और 6 रन यहाँ मिल गया है गुजरात को. That's a bad overthrow. I mean, come on. That's schoolboy error. 6 या 5 होगा. I think 6 ही होगा because 2 रन क्रॉस किए थे उस वक्त तक. बट वहां पे कवर के लिए खड़ा था बट ही मिस्ड इट He missed it. It went on. It's very bad. It's poor misfield there, especially as a backup. पैर के बीच गए थे बॉल, and that is Jadeja is definitely not happy. Jadeja is definitely not happy with that. गुजरात में मैच हो रहा है तो आई थिंक थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा फेवर मिल रहा है गुजरात को टाइटंस को और बिल्कुल. इधर चेन्नई को थोड़ा सा चेन्नई प्रेशर में है कि यार जीतना भी है और उन लोगों का होम ग्राउंड है आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग लेकिन पर आप चेन्नई देखिएगा कैन तो पूरा ग्राउंड तो मेरे को येलो लग रहा है. कोई भी गुजरात का फ्लैग तो मेरे को अब तक नहीं दिखाई दे रहा है. What do you reckon? I mean, I personally think it's like for Chennai Super Kings, wherever they play, maybe except very few grounds, I would say it's always Chennai Super Kings fans, right? I mean, wherever you play, I mean, या it's just that craze for Dhoni, and I think people also know it's the last season for Dhoni, so they just come in large number. It'll be funny to see what is going to be after Dhoni's retirement. Will Chennai get the same support or not? आपको क्या लगता है, सेम सपोर्ट मिल सकता है कि धोनी के बाद all these fans will be like, you know what, Dhoni is done, we'll support other teams. आई थिंक 20 to 30% जो सपोर्ट है वो कम हो जाएगा आई थिंक आफ्टर धोनी बिल्कुल हाँ. मुझे भी ऐसा फील होता है क्योंकि आई आल्सो सपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स फॉर धोनी Oh, सो मुझे are ऐसा you a लगता Chennai fan? I thought you were a KKR fan. है fan yeah I am okay not see I'm not a fan of any team particularly Oh, I genuinely follow players मुझे players का बैटिंग या फिर बॉलिंग या फील्डिंग अच्छा लगता है that's जैसे a good one. so मुझे एक्चुअली में क्रिकेट में सबसे ज्यादा फील्डिंग पसंद है बैटिंग Oh, बॉलिंग प्रिविलेज आप करते हो नहीं करो दैट इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन यू हैव टू बी अ गुड फील्डर तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे युवराज सिंह पसंद था रायना पसंद है जडेजा पसंद है या और दे ऑल आर लेफ्टी और विराट कोहली का फील्डिंग बहुत पसंद है मुझे कल कल का रनआउट आपको कैसा लगा था विराट कोहली का अगेंस्ट पंजाब?
छप्पड़ फाड़, मैं क्या बोलूं उसको। Possibly one of the best runouts I've seen in this year's IPL, or maybe one of the high in IPL history as well. Oh, he covered possibly 25 yards of the ground, and to throw the ball while falling down. If you have been there, I mean, we talk about Virat Kohli's fitness, right? You train whole your life for these moments, like these minute margins is what matters. I don't think any other fielder would have been able to do that, and that's why I think I was in a live with. I don't know if I wasn't live with Akash last time, and why we were comparing. Shayad Virat Kohli is the Ronaldo of cricket. That's the reason. He's that fit even at 35, and he's possibly one of the best athletes in the country. Forget the cricketing part. Yeah, and he is also a fan of Ronaldo. He's a fan of Same. Ronaldo as well, and obviously work ethics. For Yeah, me, yeah. I can say okay, Virat Kohli is the batter. Obviously, you can debate as much as you want, but the athlete Virat Kohli is. Let's be honest, man. I mean, he set a trend for all these youngsters. आज शुभमन गिल भी देखो, रियान पराग भी देखो, अभिषेक शर्मा. Everybody is like, we want to be like Virat Kohli. So the next generation is inspired them. Like Virat Kohli was inspired by Sachin Tendulkar. This generation is inspired by Virat Kohli. Yes, That's what. yes. Trendsetter. We all know that. You know, Absolutely. कल का रन आउट इट वाज लाइक सो स्मूथ, बीच में कोई भी फंबल Absolutely. नहीं, कहीं भी पैर नहीं अटका, ना ही बॉल इधर उधर गया, पूरा पॉइंट पे बॉल लगा, विकेट पे बॉल लगा, और ही वाज सो स्मूथ। एक बार में बॉल पिकअप करके Absolutely. उसने जस्ट ऐसा Absolutely. अमेजिंग। मेरे को भी लगा कि that is like crazy good. Okay, I have a question for you all. Can Gujarat score 82 runs at the end of eighth over? Put in your predictions, yes or no. I'm going to say yes. Uh, अभी 3 बॉल बचा है and I think that's still a possibility. एक बाउंड्री का बात है. I think they should target Mitchell. I'm also going to say something very interesting right now, guys. मेरे को लगता है आज का मैच में एक सेंचुरी देखने मिलेगा. आपको क्या लगता है? फ्रॉम होम लाइक। That I don't know. I'm saying one century will be there, Raj. It could be between Gill or Ruturaj. ओके, या आई थिंक इट्स गिल मे बी। Could be Gilla. But yeah, they're just showing the highlights of last year's final as well, how crazy a game that was. But talking about which again, आपको क्या लगता है इतना अच्छा स्टार्ट तो मिल गया अभी. अभी मैक्सिमाइज तो करना चाहिए. थोड़ा तो अटैकिंग और करना चाहिए क्योंकि मिचेल वाला ओवर तो दे हैव गिवन सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डैरेन मिचेल. अब एक वाइड डाल दिया यहाँ पे. और मेरे को लगता है यहाँ से तो 200 के ऊपर बनना चाहिए. अदरवाइज इट्स गोना बी a travesty of a start. Gill is playing really well. 37 of 18. Strike rate, there is no question. He's looking really good. Sai Sudharsan has taken his time, but you have to capitalize from here. 200 के ऊपर बनना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पिन जैसे ही आएगा ना, विकेट गिरेगा। थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आई थिंक थोड़ा स्लो होगा स्पिन जैसे ही आएगा। बिल्कुल हाँ. आई थिंक That's a beautiful shot from Gill, but just a single. But yeah, a 79 it is. So guys who predicted 82 at the end of at the end of 8 overs, maybe you guys can just change it around a little bit. Let's go to our next prediction. Next prediction is definitely going to be about Sai Sudarshan scoring 50. क्या लगता है आपको Sai Sudarshan को 50 मिल सकता है इस मैच में? yeah, I'll say yes, and I think it's risky, but I'll say yes. Yes. Okay. Okay, so Simran says yes, and guys also comment down below. आपको क्या लगता है कि will we see a century in today's match? Yes or no? Like, can we see a century in today's match? क्योंकि मेरे को तो अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि आज सेंचुरी आ रहा है. पता नहीं किसका बैट से, पर if it is a good score, I think there's century from Ruturaj, or if first innings as well. Gill, if he stays, he can possibly score a century. He can capitalize. It just feels like one of those days. और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? I never asked you this question. Uh, आई डोंट नो, जीटी बहुत ज्यादा ही फॉर्म में लग रहा है, पता नहीं क्या सोच के आया होगा आज। मुझे तो पहले लगा, मैं कल से सोच रही थी कि आज चेन्नई जीतेगा, आज तो कोई चांस नहीं है चेन्नई जीतेगा, लेकिन अभी शुभमन गिल को देख के लग रहा है कि अगर ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसे देख रहा है बॉल को, क्रिकेट बॉल को फुटबॉल की तरह देख रहा होगा, आई डोंट नो। तो पता नहीं बाकी बाकी के प्लेयर्स क्या सोच के आए होंगे आज ग्राउंड पे कि आज जीतना ही है। तो आज चांस लग रहा है मुझे थोड़ा जीटी का, मुझे जी थोड़ा बिल्कुल, चांस। मेरे को भी लगता है कि जीटी का चांस है, काफी चांस है आज जीटी को जीतने के लिए, क्योंकि if you look, they have taken on Jadeja here, beautiful shot from Sai Sudarshan,
This is exactly what I was talking about. Left right combination, left arm spinner को अच्छे तरीके से खेलता भी है साई सुदर्शन. 84 here, and Sai Sudharsan will know that he has to be taking the anti, क्योंकि बैटिंग है अभी भी. If you look, शाहरुख खान भी आने के लिए, शाहरुख खान अच्छे प्रदर्शन किए थे पिछले मैच में भी, उसके पहले भी आरसीबी के खिलाफ. और आप देखिएगा तो शाहरुख खान का होम टीम के खिलाफ भी होगा इस मैच. इफ यू लुक, साई सुदर्शन भी चेन्नई से है, शाहरुख खान भी चेन्नई से है. आप देखिएगा तो इस टीम में तीन चार प्लेयर ऐसा है चेन्नई से है. गुजरात टीम है, साई किशोर, साई सुदर्शन, विजय शंकर और ये शाहरुख खान भी. ज्यादा चेन्नई का टीम मेरे को गुजरात लग रहा है, गुजरात से ज्यादा. और गुजराती ज्यादा गुजरात प्लेयर्स चेन्नई में है. जडेजा एक गुजरात का प्लेयर है. Yes, yes. But और uh, I think it's all about Dhoni. See, it's a six beautiful shot from uh, इट्स अ Sudarshan. ब्यूटीफुल शॉट. काफी Six अच्छा शॉट था. 50 that you want. ओके, सिमरन, लास्ट के वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हु इज द बेस्ट लेफ्ट हैंडर इस सीजन आईपीएल में? मैं इंडियन प्लेयर्स का नाम चुनता हूँ. मैं साई सुदर्शन का नाम रखूंगा. एक बहुत अच्छे 50 यहाँ पे साई सुदर्शन का, और फॉर्म अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहा है. एक साई सुदर्शन है, एक अभिषेक शर्मा रखूंगा मैं, यशस्वी जायसवाल. आप चुन लीजिए, आपको सबसे पसंदीदा प्लेयर कौन है इससे? लेफ्ट हैंडर का बात कर रहा हूँ मैं. Left hander का right? हाँ. Uh, मुझे टेक्निक में ये साई सुदर्शन अच्छा लगता है, और बहुत ही फियरलेस बैटिंग मुझे अभिषेक शर्मा का अच्छा लगता है. बहुत ही फियरलेस, मतलब आगे पीछे कुछ सोचता नहीं कि यार इस बार भी मारूंगा तो आउट भी हो जाऊंगा तो क्या होगा. तो या दैट इफेक्ट आता है क्योंकि युवराज सिंह ने उसको सिखाया है, सुना है मैंने. हम्म. तो जी बिल्कुल. अच्छा लगता है उसको देख के भी. बट मैं तो बहुत साई सुदर्शन चुनूंगा, क्योंकि इफ आई पर्सनली फील एक प्लेयर ऐसा है कि हर कंडीशन में जाके एक्सेल कर सकता है, वो साई सुदर्शन ही होगा. क्योंकि मेरे को ना इसको देख के मेरे को लगता है कि ये इंडिया का प्लेयर है. लाइक अगले 10 साल के लिए इंडिया के लिए खेल सकता है. मतलब ही कैन प्ले अक्रॉस फॉर्मेट्स, टेस्ट क्रिकेट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. पुल भी अच्छा है, स्विंग भी अच्छा खेलता है, स्पिन भी खेलता है. एक या टेक्निकली कॉम्पैक्ट प्लेयर. मेरे को अभिषेक को देखे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, T20 में तो चल जाएगा, पर हाँ, मेरे को लग रहा है कि हो सकता है. यशस्वी को कंसिस्टेंसी फैक्टर में मैं उसको रोकूंगा. बहुत पसंद है मेरे को यशस्वी का बैटिंग देखे, काफी अच्छा टैलेंट है. आई थिंक इज वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट्स. बट if you have to say consistency, compactness, technique, if it ticks all boxes, that is Sai Sudarshan for me. और मेरे को लग रहा है कि अगले 10 साल में खेल सकता है. अगले 10 साल में बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है साई सुदर्शन इंडिया के लिए. बिल्कुल, अगर कंसिस्टेंसी और टेक्निक इसी तरीके का रहा तो अगले कुछ सालों में साई सुदर्शन वन ऑफ द टॉप प्लेयर होगा इंडिया के जी लिए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अ, जिनके ऊपर हम लोग भरोसा करेंगे. लाइक आप अगर इसके पहले जनरेशन का बात करोगे तो आप कौन से प्लेयर को सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? सचिन, द्रविड़ और सहवाग. द्रविड़, हाँ बिल्कुल, हाँ. मेरे को लग रहा है कौन? ऐसा टाइम में हम जा रहे हैं कि यशस्वी, साई और शुभमन हमारा टॉप 3 रहेगा. ऐसा कि सचिन, सहवाग, द्रविड़ था, वैसा ही रहेगा अगले 10 साल. अभी कोहली और रोहित के बाद, इफ यू लुकिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, मैं 3 प्लेयर का नाम चुनूंगा. एक यशस्वी, एक साई और एक शुभमन. 3 प्लेयर रहेगा इंडिया के लिए अगले कुछ 10-15 साल के लिए, बिकॉज दिस विल बी मेन प्लेयर्स. और फॉर्मेट के हिसाब से अभिषेक भी आएगा, और दूसरे रियान पराग भी आएगा. इन लोग भी आ सकता है. पर इफ यू आस्क मी 3 कंसिस्टेंट फैक्टर्स, इन 3 रह सकता है. कि ऐसा हम बोलते थे कि रोहित, विराट और धावन, वैसे टाइप का रहेगा. या अग्री अग्री. लेकिन और भी कुछ प्लेयर है राइट जो आ सकते हैं, मतलब टीम में. आपको क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर कैसा है अभी इंडियन टीम का? देख, मेरे को लगता है कि इफ एज आई मेंशन रियान पराग, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, एंड आई होप दैट ही कम्स इनटू द फ्रे ऑफ थिंग्स एज वेल. रियान पराग, मैंने एक नाम बोला, नीतीश कुमार रेड्डी भी इज वन फॉर द फ्यूचर. मैं बहुत पहले भी बोला था, नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग बहुत बहुत पसंद है मेरे को उन दोनों को देखे. फास्ट बॉलिंग में तो अभी है, अभी मेरे को लग रहा है अर्शद राणा भी आएगा. अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हो गया है, 9 ओवर में 94 रन. इट्स डैरेन मिचेल अगेन. I think this is an over they should target, to be very honest, because first over of Darren Mitchell, they played him out very well. You think they should go after someone like a Darren Mitchell, because he's not an experienced bowler as well. I mean, he balls medium pace. Pace उतना नहीं है, पर if you can target him, Ruturaj will be under a little bit of pressure. बिल्कुल बिल्कुल. ऋतुराज तो नहीं, धोनी प्रेशर में लग रहा है अभी. वी Yeah, ऑल नो. that's a good one. तो यहाँ पे ऋतुराज समझा रहा है, हो या फिर ही
being the captain. मेरे को लगता है जब भी whenever Ruturaj goes out in the deep to field, Dhoni is the one who controls things in the middle. See, you can see that. ऋतुराज अभी वो दीपक के साथ बात कर रहा है इधर, वो हंस रहा बहुत है ही और बेहतरीन shot. yeah. There's nothing to say. That's just a beautiful shot. One of the shots of the night today. I mean, whack you can say, just straight down the ground. Glad that it didn't hit the stump because you're saying a lot of these shots being played and hitting straight to the stump at the non-striker's end. But yeah, Yeah. beautiful from Shubman Gill. इफ यू हैव सीन बिफोर कि डेरिल मिचेल के बॉल में ना बहुत स्ट्रेट शॉट मारते हैं. आई जी डोंट जी नो, बिल्कुल. मैंने भी देखा है कि बहुत ही स्ट्रेट शॉट मारते हैं और इससे पहले भी डेरिल मिचेल ने एक आउट भी किया था जो कि स्ट्रेट मारा था, उनके हाथ नहीं आया था शायद. जी जी. मेरे क्या को बॉल लगता है आता डैरेन मिचेल का बाउंस उतना नहीं है. His ball keeps a little, until unless he tries a bouncer, you don't get a lot of bounce in his ball. So it's always better to play him straight as well. And he balls in that length, like full length mein dalta hai. So it's always good to play him down the ground or play him the V as you would like to mention. They have reached almost 100 here in 9.2 overs. Sai Sudharsan looks good. Shubman Gill looks good. I mean, new opening pair for Gujarat, and they are loving it. I mean, I'm loving this opening pair. मेरे को हमेशा लगा है कि they should always open together. And I was a little surprised at why they did not play Matthew Wade as well. काफी combination strike किया, and I was never happy with the decision, trying to play Karthik Tyagi. I am a big fan of Karthik Tyagi, guys. I mean, if you guys know Karthik Tyagi as well, do comment down below what do you guys think of Karthik Tyagi. But I'm a big fan of Karthik Tyagi, and I was very very upset at the fact that they did not play Karthik Tyagi initially. वहाँ पे एक cheeky shot ट्राई करने की कोशिश है और फाइन लेग में बाउंस करके गया. बट सिमरन, आपको क्या लगता है कार्तिक त्यागी के इंक्लूशन से गुजरात को एक और ऑप्शन मिल गया है इंडियन बॉलिंग कंटिजेंट के बारे में बोल के? हाँ, मिला तो है, एक ऑप्शन मिला तो है, लेकिन कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, लेट्स सी क्या होता है. Obviously, obviously, if he goes for runs, it's okay, but you should back the kid. He's got definitely a big talent, and hopefully, you will see Karthik Tyagi as well play for India one day. And I'm a big fan of him. I'm being a little biased right now, I know, guys, but I'm a big fan of Karthik Tyagi. As an RCB fan, I always wanted him in RCB. I felt like this guy's got like real potential to be someone big. Because मेरे को याद है, I don't know if you remember Simran, 2021 में 3 रन चाहिए था पंजाब को जीतने लास्ट ओवर में, और कार्तिक त्यागी बॉल कर रहे थे निकोलस पूरन और दीपक हुडा के खिलाफ, एंड ही डिफेंडेड दोस 3 runs for Rajasthan, if you remember. या That was a crazy game. So I remember, like, this guy was a big fan. I was a big fan of him since 2020 under 19 World Cup. Such a phenomenal cricketer. I believe like a lot of potential for him. But yeah, here coming back again, 102 at the end of 10 overs. Can you still say 220 is possible? That's another four. Wow. I thought that was a single, but great shot there. Well pierced the field, and 105 here, 9.5 overs. And there's a predictive question going on as well for you guys. Do you guys think? Okay, the आउटफील्डिंग predictive फास्ट. question here. या Yes, predictive question is, can GT score 107 at the end of 10 overs? If you guys have given the question, yes, obviously say the yes. Because there's still 2 more runs for that. It's still a possibility as well. या आउटफील्ड बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है क्योंकि थोड़ा हल्का पंच था, लेकिन बॉल बहुत फास्ट चला जी गया. बिल्कुल, and एंड it looks very good. I mean, Gujarat is a high scoring ground. Always notice या that. सी इट्स 107. या 107, yes. And if you have the guys have said yes, I think it's 10. Yeah, 107. They've taken two as well, so it's perfectly 107 now. So the question, if you have said a yes, yeah, you guys have really been good in the predictors contest. But I'll ask you another question now, because there's a lot of questions happening there. And remember, with buy stars, you can win big with every question you answer. So remember, that's the best part about being in buy stars. Maybe even if your team is playing today, even if you give a bad answer, don't worry. If your team is doing well against that answer, you can always win big. So it's about a psychological thing as well. Uh, just coming to this factor as well, can Sai Sudarshan score 75 runs in this match? Simran, what do you think? या आई थिंक आई गो विद यस नाउ. एंड आल्सो इफ देयर इज अ Yeah. क्वेश्चन कि शुभमन गिल 50 करेगा कि नहीं, 50 करेगा कि नहीं, There is a आई से question. यस. There is a question on that. I put that या as well आई से. on the screen. या So that's a top edge. और मेरे को लग रहा है छक्का गया है वो. And that's a 50 as well, as you just mentioned it.
That's a 50 for Shubman Gill as we are talking. And Shubman Gill looks in great form. And Yeah. the fact that I mentioned there could be a century tonight is still there. And let's see. I mean, tonight could be a night where you're going to see Captain Shubman Gill back in form. I'm going to ask a new question. Can Gujarat score 131 runs at the end of 12 overs? आपको क्या लगता है? 131 yeah, I'll go with yes क्योंकि फॉर्म में अच्छे लग रहे I हैं think yes. और yeah, I think Shubman Gill scoring, it's a 200 strike rate kind of a 50. Incredible from Shubman Gill. I mean, he's looked good. He's sending out a statement, a must-win match. And if someone had to step up, it's Shubman Gill. मेरे को हमेशा लगा है कि Shubman Gill is a man for big occasions. I mean, obviously you can say, oh, World Cup semi final में कुछ नहीं run नहीं मारा. And you have to admit that Shubman Gill himself accepted that after dengue fever, he's not been in good form. If you look, Shubman Gill in big finals, he's always stepped up. And I think he's a man for big occasions. There'll be IPL final in 2021, Under 19 World Cup semi final, और मेरे को लग रहा है कि गाबा का टेस्ट मैच. Shubman Gill has always stepped up in big occasions, in my opinion. yes एक एक टाइम था जब शुभमन गिल ने बैक टू बैक 100 बनाए थे राइट यू रिमेम्बर दैट हाँ हाँ पिछले साल ही ना या आईपीएल की बात करो हाँ. हाँ इट वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट और उसी टाइम से शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि यार बड़े गेम के लिए ही मेड फॉर दैट कि मतलब बड़े गेम के लिए ही इज देयर और रन बनाएगा और हमेशा खड़ा भी रहा है कि जब भी रन का जरूरत है शुभमन गिल इज देयर 50 रन तो बना के ही देता है 50 60 जी या बिल्कुल. रन बना के देता है तो आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर है और आपको याद है तो पिछले साल मुंबई के खिलाफ क्वालिफायर क्वालिफायर 2 में ऑफ द आईपीएल जब when Gujarat were playing Mumbai in the qualifier 2 of IPL. This guy scored a brilliant 100 in Ahmedabad. You knew this guy yes can do it, and that's what he can do. He's a guy for a big occasion, and अभी बहुत अच्छा ओवर मिल गया. I mean, it's two boundaries back to back, and 117 here at the end of 10.2 overs. आप किसको भेजेगा इसका एक विकेट जाएगा तो मैं तो शाहरुख खान को भेज दूंगा. मुझे जाके मार. uh, आपको क्या लगता है? I can also send David Miller or Matthew Wade as well. I personally will send Shah Rukh Khan because I think he's got the ability to go and turn a game around. I mean, you can take on the spin as well if need be. yeah, Shahrukh Khan is good. I think I'll go with him only. Yeah, he's a good player. Potential. Yeah. So Absolutely. I for you, Abel, that what do you think about KL Rahul right now? कंट्रोवर्सी के बाद तो काफी आपने वीडियो देखा होगा पिछले एक दिन में क्या हुआ है उस मैच के बाद. आई विडंट वी एज वी स्टॉप कमेंटेटिंग. आपको पता है हम दोनों ने किए थे वो कमेंट्री उस मैच के लिए. आपने भी वीडियो देखा होगा कि गोयनका के खिलाफ गोयनका के साथ क्या हो रहा था. आई पर्सनली थिंक इट्स सैड. I feel bad for him genuinely. Because as a player, right, you're an you captain India, you're a captain of your franchise. You're getting like scolded in front of the public is definitely not a good thing. But I Yeah. think, you know, when your time is not going well, nothing goes well, right? And Goenka is a very, strict owner, I would say, because आपको याद है तो 2016 में पुणे सुपर जायंट्स का काफी गंदा सीजन गया था. कुछ 8वां या 7वां पोजीशन में खत्म किए थे. उसके बाद उन लोगों ने एमएस धोनी को सैक किया. तो आप सोच सकते हैं कि किस माइंडसेट का ओनर्स है उन लोग और किस माइंडसेट से उन लोग क्रिकेट भी चलाते हैं. एक बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे साई सुदर्शन का और 6 रन और 124 हियर एट द एंड ऑफ 11 ओवर्स. और वही मैं बोल रहा था कि संजीव गोयन का एक ही इज समवन हु ओन्स अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स लाइक मोहन बगान सुपर जायंट्स भी वेस्ट बंगाल में इज ओन्ड बाय हिम. And he's Yeah. someone who wants success all the time. And for him, he Exactly. doesn't take this kind of small things. And he was very clear. आपको क्या लगता है? मेरे को लग रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है केएल राहुल के बारे में. उस कॉन्वर्सेशन पब्लिकली नहीं होना चाहिए था. Yeah. I will come back to that and see यहाँ पे और एक शॉट और एक छक्का साई सुदर्शन के बैट से थर्ड मैन के ऊपर वो से बहुत What do you बढ़िया think? शॉट यहाँ पे. दैट्स Yes. अपर कट. और जो प्रेडिक्शन हमने किए थे 130 और जो 12 ओवर्स अभी 11 ओवर में ऑलमोस्ट बन गया है स्कोर. क्रेजी ओवर. दैट्स अ बिग ओवर फॉर देम. 3 छक्का गया इस ओवर में. आई थिंक 3 सिक्सर्स एंड अ 4. कितना रन Yeah. बना है इस ओवर में? आई थिंक दिस 24 runs of this over if I'm not wrong. Yeah. Yeah, 23 runs of this over. Beg your pardon.
23 runs of the over, very big over. If you're a GT fan, this is an over really they maximized. And what an excellent opening stand. This is the first time these two are opening together in this IPL, and they're showing that, guys, what, and they opened once again this IPL, but first time in Ahmedabad, what I'm talking about, and they've done an exemplary job. That's why they opened against Lucknow Super Giants as well. At that time, they got all out very quickly in that match. They also opened before that when BR Sharath was batting in the middle order. But either ways, these both opening together should have been the way to go for the Titans. But finally, they found their mojo and they're delivering at the right time. Yeah. So yeah, we're talking about that KL Rahul, right? So मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एक कोई रूल बनाना चाहिए कि कोई भी कैप्टन या कोई भी प्लेयर से जो ओनर है वो इस तरीके से बात नहीं कर सकता है. दिस इज हाई टाइम फॉर लाइक आईपीएल फ्रेंचाइजीज की इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए Simran, ग्राउंड. I'll also add this point. I mean, the IPL is such a corporate environment. It's not like BCCI or national. Like it's not like that, right? It's a corporate environment. Owners also means high stakes. Like for example, owners really demand success. For me, what I feel is in such environments, यू शुड बी रेडी फॉर सैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्योंकि आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको पता होगा लाइक बड़े बड़े कोचेस भी सैक होता है लाइक आफ्टर अ बैड परफॉर्मेंस एंड द स्टेक्स आर वेरी हाई देयर सिमिलरली आईपीएल इज अ वेरी सिमिलर स्पोर्ट इफ यू आर गोना नॉट डिलीवर यू गोना गेट सैक बट आई डोंट थिंक पब्लिकली करना चाहिए ये सब लाइक पब्लिकली कमिंग आउट एंड मेकिंग एन इशू इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग आई होप दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आपको पता होगा तो बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट्स भी रहा है कि बिहाइंड द सीन्स बहुत बहुत कुछ होता है इट बी बिहाइंड द सीन्स दैट्स व्हाई इट्स बिहाइंड द सीन्स वी डोंट नो व्हाट हैपेंस अभी कुछ 50 कैमरा होते हैं ग्राउंड में एंड एवरी कैमरा कैप्चर्स इवन लिप मूवमेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड केएल राहुल kudos to him काफी कूल रहा उस मैच के बाद and he kept very cool and he did not really reply back as well. What a great onslaught here which is happening. Simran, I think we are almost in that Abhishek Sharma, Travis Head phase where the batters are going all out, bang, bang, bang. Sai Sudharsan has scored 75 runs. If you have predicted that, it's a big, big bonus for you. 79, 21 runs away from a century. मैंने प्रेडिक्ट किया था एक सेंचुरी आ रहा है. I hope it's from either of them. So brilliant, brilliant from Sai Sudarshan. He loves playing Chennai in Ahmedabad for sure. He's on fire now. Absolutely. और He's एक taking. और अच्छे शॉट और I think it'll be just a single here. But yeah, 12 almost 12 overs 140 and 230 तो possible लग रहा है. या तो इसे 240 बनाना चाहिए मेरे ख्याल से. 15 ओवर में आई थिंक 180 बन जाएगा. व्हाट डू यू से? Let's see if there's a predictive question for that. Let's see what is a predictive question. I would say, yeah, there's no predictive question yet, but once the predictive question comes, I'm going to say yes, 180. I'm bringing a 240 end. You can place your bid here. 235 to 240 is what I believe. Oh, this is four. This is four or not? I think he saved it. He's not touched anywhere. एक और एंगल देखना चाहिए. He saved it. Yeah. आपको क्या लगता है? I और see. आपने देखा होगा वो संजू सैमसन वाला डिसमिसल एज वेल. आपको लगा वो सिक्स है कि नहीं? Which one? I think I missed it. वो संजू सैमसन अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स वो आउट हुआ था और काफी ज्यादा चेक हो रहे थे and I think that was a big controversy on that as well. And that's why somewhere I feel there could be like a buzzer near you see this stump light up, this boundary line can light up when there's an impact. I think that should be the future of cricket because you don't know if you're touching or not. If you're Yes, touching, yes. if at all there's a contact, there could be a it can light up and show okay fine there is a contact because it can these minute margins can be saved. You can save time as well. A lot of things can be done if you have a small lighting. Now, kuch technologies you're implementing. You can also implement a sensor technology where if there's a contact, then the boundary rope can light up. Yeah, yeah. It's a good idea. I think intelligent idea. I think we should pitch it to BCCI. Yeah, I definitely Good should. I idea. think आज मैं लिखूंगा mail. Yeah, But good idea. और इतना जब हो रहा है कि हम लोग मतलब वो जो क्या बोलते थर्ड अंपायर जब कोई डिसीजन ले रहा है या फिर जा रहा है कोई डिसीजन लेने तो वहां पे भी एक कैमरा लगा हुआ है राइट. सो इतना yes, जब yes, yes. ट्रांसफर हो ही चुका है तो व्हाई नॉट दिस राइट. ये भी So guys, I'm going to हो. ask the biggest question of the night. Will Sai Sudarshan score 100? मैंने predict किया था बहुत पहले कि there's a 100 coming up. So the question is for you guys. Will Sai Sudarshan score 100 on that? सिमरन आपको क्या लगता है?
I'll go with yes, definitely. Yeah, I'll also go with a yes. I would love to see a Sai Yes. Sudharsan 100. I felt very bad when he couldn't score 100 against Chennai in the final of IPL, where he missed out by 4 runs. यहाँ एक opportunity है साई सुदर्शन को 100 बनाने के लिए. If he scores, it's going to be a massive 100 for him. And yeah, I mean, great player. I mean, I love watching Sai Sudarshan bat, personally speaking, and I just mentioned how I love watching him bat. And Chennai के लिए भी, how much would they want to chase tonight? Obviously, Chennai is a very good batting lineup, but pressure तो रहेगा ही. If they lose couple of wickets up front, it's never going to be easy. या यस, चेस करना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। अगर बहुत बड़ा टारगेट होता है ना, तो चेस करना थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं और मारने जाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम जी हर बिल्कुल. टीम के साथ होता है। और लाइक अभी देखो स्पिनर आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या फिर नो, आई थॉट, That's a मुझे no. लगा That's कि that's brilliant shot from Gill. And Gill has looked to target Sandner today. पहला over से ही he's going after Sandner, and this is a Gill I like. Gill against spinners whenever he's attacking. Oh, he's another beast, man. I love watching Gill. If you Shubman Gill sits a yeah, since playing cricket, against spinners he'll attack, and he's a brilliant player to watch. और समय मेरे को लगता है कि Chennai has missed a trick here. They should have possibly tried in someone like a Moeen Ali as well, वही like रही या। against a Sai Sudarshan. या और यहाँ पे that's almost pierced the gap. And काफी अच्छा start है ये. I mean, if you look 147 in 12 overs, has been Gujarat's best score thus far. If you look in 12 overs range as well, and they would know that they have to maximize tonight. And obviously there's a Shah Rukh Khan, there's a David Miller, there's a Matthew Wade, Rashid Tewatia. इतना अच्छा power house of a batting lineup है, तो they would have to keep going. I mean, from here on it's just bang 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 from what I see. या आई थिंक जो बॉलर आ रहे हैं ना बॉलिंग करने के लिए, थोड़ा स्लो डाल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? डेरिल मिचेल भी सैंडलर का आई थिंक सैंडर्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज ही कैन वेरी द पेस, राइट. उसका पास वो बॉल भी है जिस तरीके से वो 100 में भी डाल सकता है, 75 में भी डाल सकता है. इफ यू लुक एट द लास्ट बॉल वेयर ही टुक अ सिंगल दैट वाज ऑफ 75 किलोमीटर्स एंड इट्स वेरी गुड. आई लव सैंडर. आई मीन ही इज सच अ underrated spinner in the world. For me, if you ask me some of the best spinners in the world, orthodox spinners, I put Sandner number one. I put Sandner even over Jadeja. Jadeja इतना अच्छा बॉलर है, पर ऑर्थोडॉक्सिटी और जिस तरीके से उसका लूप है, काफी क्लासिकल बॉलर है वो. या एक्चुअली में ऑर्थोडॉक्स बॉलर का यही होना चाहिए कि थोड़ा सा हवा में बॉल रहना चाहिए। लेकिन जी जडेजा का बिल्कुल. क्या है कि स्पीड में बॉल आता है कि आप यू कैन नॉट डिसाइड कि आप फ्रंट फुट में खेलोगे या फिर बैक फुट में खेलोगे, राइट? जी तो बिल्कुल. यहाँ पे एक बहुत गंदा लाइक व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट praising Sandner, इस बॉल वन ऑफ द very bad ball there, full toss on the leg side, that's a four there. Commentators कर्स कहूंगा मैं इसके लिए. वी बिन तारीफ कर रहे थे सैंडनर का, और बट ईदर वेज आई मीन they both looked very good. No bowler has looked to trouble them both today. एंड सैंडनर भी प्रेशर में रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर को बॉल कर रहे हैं, एंड साई सुदर्शन लव्स प्लेइंग लेफ्ट आर्म स्पिन. No, you were mentioning about the left arm spin as well. मेरे को लगता है कि सैंडनर को भी you have to keep the ball away from the body. That's a good ball, but again that's a four. But intention, no, that's not a four. Sorry, there's not a four. I think there's 2 runs there. अच्छा ball था वो. You should keep the same length if he has to pick Sai Sudarshan there. यस यस, लेग स्टंप पे बॉल करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लेग स्टंप पे हर एक बैटर स्ट्रांग हो रहा है, और पीछे भी कुछ फील्डर ज्यादा है नहीं। एक शॉर्ट फाइन लेग को रखा इधर, ओ एंड इट्स अ Simran, सिक्स। I have a very interesting stat to tell you. It's a stat between us both only here. Since we have started commentating, पिछले मैच से एक विकेट भी नहीं गया है. या आई डोंट नो व्हाई। 300 के ज्यादा ऊपर रन बनाया है, वो भी कुछ 20 ओवर के अंदर 300 के ऊपर रन हमने देखा है. एक विकेट नहीं गया अब तक. या कोई भी टीम हो, आपको विकेट नहीं चाहिए तो हम दोनों को कमेंट्री में डालो. वी आर योर लकी चांस. या हम बॉलर्स के खिलाफ नहीं है, पर हाँ. यस यस या, देखना चाहिए, देखने वाली बात है यार। हु नोस कि अगर मैं और आप बैटिंग करने उतरे ओपन पे, तो क्या पता क्या वी पता. कैन मेक, आई डोंट नो। Yeah, I think that's a good one. I mean, एक भी wicket नहीं गया है. Like guys who are watching this, me and Simran have been commentating for the Hyderabad versus Lucknow second innings and now the first innings. एक भी wicket नहीं गया. We watched 9 overs of that game. 13 overs of 22 overs. एक भी wicket नहीं गया.
So and 300 plus runs guys. पता नहीं विकेट तो आएगा बिल्कुल आएगा पर हाँ आई एम जस्ट सेइंग वी आर वेरी गुड. वो वाइड लग रहा है मेरे को वो वाइड लगा था वो बॉल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सिमरन? स्टिल नॉट ऑन किया ये वाइड. आई थिंक वाइड नहीं है ये. नो. वाइड नहीं है. इंटरेस्टिंग. मेरे को भी लग रहा है कि let's touch and go maybe on another day some umpire would have given it wide. और आपको क्या लगता है कि ये अंपायर्स का डिसीजन भी इस आईपीएल में काफी problematic रहा है? Like umpiring, let's talk about umpires this IPL. What do you make of it? I feel the umpires have been very bad this IPL. That's हवा में गेंद और that's a six. Oh, beautiful from Shubman Gill. ऋतुराज के ऊपर प्रेशर दिख रहा है. I mean, there's a predictive question. Can GT score 171 at the end of 14 overs? मेरे को लग रहा है 171 इसी ओवर में हो जाएगा. Yeah. I think we've just lost Simran quickly here. But either way, he's talking about the game. 13.2 overs, 166. And here, Shubman Gill and Sai Sudharsan are showing us. I mean, they're not playing slogs, right? They're playing genuinely good cricketing shots and getting those runs. And that's the best thing about tonight. I mean, if you look how these both are batted, that's another brilliant shot that's up in the air, rather. And that's over the top. Oh my gosh. That could have been a catch, but that's a six. That's a six. That's a six. Oh, that's a four or a six. It's given as a four. But either way, it's 170 here. That was the opportunity missed out by the Chennai Super Kings. Is that a six or a four? Let's see. I think it's given four. Arshit, Yeah. sorry, Simran, there was almost a wicket there. छोड़ के गए थे when you left. But either way, that's a four. That's a six. But either way, आज का तो दो two back to back sixers here. प्रेशर लग रहा है मेरे को चेन्नई के ऊपर अभी. Yes, it's 172 without any wicket. And इससे पहले कभी हुआ है ऐसा कि चेन्नई बॉलिंग कर रहा हो और एक भी विकेट नहीं गिरा हो 13 ओवर तक? मेरे को याद नहीं है. सच में नहीं. मेरे को याद नहीं. आई डोंट रिमेम्बर बिफोर. और नहीं मुझे. डैरल मिचेल काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है मेरे को. ये डैरल मिचेल ना कूल क्रिकेटर. आई हैव नेवर सीन हिम लूज हिज काम एज वेल. यहाँ पे ही लुक्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड because that was a catch which could have been taken. And Shubman Gill काफी अच्छा फॉर्म में भी है. He can take on the spinners. I think tonight the biggest positive has been these both have taken on Chennai spinners. Like literally, like Jadeja and Sandner, who are Chennai's trump cards. And that's why I feel they missed the trick in not bringing Moeen Ali. Moeen Ali is a partnership breaker. मैं हमेशा देखा है कि he can come and turn the partnerships around. He can like break these partnerships. I don't know. Oh, It's what a shot from Shubman Gill there. That is just too good. Too good. Three sixes of this over already. 178. हमने 15 overs में 180 कहा था. अभी 14 overs में होने वाला है. And I think that is just brilliant from Shubman. मैं एक सेंचुरी प्रेडिक्ट किया था. शायद क्या पता कि दो सेंचुरी आ जाए इस मैच में. सुदर्शन से पहले गिल का सेंचुरी आ जाएगा आई थिंक, जिस तरीके से जा रहा है मैच. जी बिल्कुल. और and I think this is just a crazy batting from both Shubman and also from Sai Sudarshan. Because what I love watching is Simran, एक भी शॉट ऐसा नहीं लगा कि T20 क्रिकेट का ऐसा मॉडर्न गेम है लाइक स्लॉग. इट्स ऑल बीन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स एंड एलिवेशन ऑफ इट. यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि एक भी शॉट ऐसा गलत नहीं खेला. मतलब सबसे ज्यादा मैं सुदर्शन का बात करूंगी कि एक भी शॉट उन्होंने एक भी गंदा शॉट नहीं खेला अभी तक. हर एक शॉट नाप नाप के खेला है. और इसके पहले वाला जो छक्का था ना वो स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो आप देखना किस तरीके से कितना कितना बाउंड्री है. ऐसा लग रहा है कि गिल ने वो नाप के आया था जब वो खेलने आए थे, उसके पहले वो नापा होगा मीटर से, फिर उसके बाद ही वो छक्का मारा है. इतना प्रेडिक्टेबल, इतना अच्छे से वो छक्का मारे कि यार वो गिर ही रहा है बाउंड्री के बाद. इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपको पता है कि कितना जोर से हिट करने से बॉल बाहर जाएगा. जी जी बिल्कुल. एंड आई थिंक like you mentioned, if you're a cricket fan and if you really love like cricket in all formats, and you don't, sometimes you want to watch some really good cricketing shots, and if you're like a kid watching at home as well, this is class. I mean, in दोनों अच्छा खेलता है रेड बॉल में भी. So that is just an extension of the red ball game, I believe. Like जिस तरीके से कंपोजर रखा है इन दोनों बॉडी शेप में कहूंगा. वेरी वेरी क्लासी शॉट्स. कवर ड्राइव भी जस्ट एक्सटेंशन ऑफ कवर ड्राइव. स्ट्रेट ड्राइव्स भी. और जिस तरीके से पुल भी मारा है. आई लव टू वॉचिंग देम बोथ बैट. आई मीन, you would say Travis said Abhishek Sharma, anyone, but I would say take Sai Sudarshan and Shubman Gill this wala innings because
This is what you want to see. If you are like a genuine cricket fan, कल हम विराट कोहली का innings भी देखा था, कितना अच्छा खेला था. He's like, this is not Virat Kohli school of cricket. I mean, you can still bat at 200 strike rate and still bat with like really good cricketing shots, and that's what I See, love watching. there is a different story about 360 डिग्री का क्रिकेट, राइट? कि कोई आता हाँ है 360 डिग्री में मारता है, और एक होता है कि आप बिल्कुल हर एक बॉल को उसी तरीके से पनिश करते हो जिस तरीके से वो आता है, राइट? तो जी मुझे बिल्कुल. ऐसा लगता है कि बॉल के अकॉर्डिंगली मारते हो, चाहे वो डाइव हो, स्क्वायर कट हो, या फिर पुल हो, हुक हो, कुछ भी, तो आई थिंक आप बॉल और बॉलर और खुद को भी रेस्पेक्ट देते हो. जी आई बिल्कुल. थिंक और क्रिकेट में एक one respect बढ़ thing I'll जाती है. tell you, Simran, I mean, आज का मैच में some of the shots, like एक साई सुदर्शन का कवर्स के ऊपर एक छक्का मारा था शार्दुल को. I mean, that was out of the world. Not a lot of players have been able to do that. I mean, even if you look at Sai tonight, and even if you look at Gill, both have shown like, you know what, this is classic batting. And if you really love watching them, that's what I would say. Chennai Super Kings will know that they have they're in big trouble here. I mean, obviously they have batting still to go, but the fact of the matter is, जो भी इन्होंने अब तक the batting किया है, they've just looked out of the world. They've just looked beautiful. Yeah, So, it's man, what is your score prediction? How much do you think they'll score? I've predicted 240, if I'm not wrong. I think it we can make more than 240 because it's already 180, और अभी भी कितने बॉल बाकी है? इधर 4 बॉल और 30. 245. I'll just go with that. What do you think? या 245 to 50, अगर कोई विकेट नहीं गिरता है तो, और अगर गिर जाता है तो रन रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा. वो भी है, पर मेरे को लगता है कि इवन इफ दे गेट आउट, अभी एक डेविड मिलर को भी आना है, देन देयर इज शाहरुख खान, एज आई मेंशन, मैथ्यू वेड, एंड आई पर्सनली थिंक that is going to be a very interesting thing. या यहाँ पे आई थिंक इट्स वाइड, राइट? या इट्स वाइड. और चिल्लेस मैं बट. देख रहा हूँ कि इस ओवर में एक अच्छी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया है देश पांडे ने, मतलब अराउंड द विकेट डाल के डालने का. आई मीन, इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. आई मीन, समटाइम्स इट वर्क्स एज वेल. और या वो ऊपर, आई थिंक दैट्स गोना बी अ विकेट. ये, ओह, दैट जस्ट बाउंस्ड. ओके, सी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ट्राई समथिंग डिफरेंट, विकेट आते आते बच गया. आई मीन, स्टिल नॉट अ विकेट, बट अ गुड आइडिया. गुड आइडिया, हाँ. राउंड विकेट बॉल करने से थोड़ा सा ऑफ स्टंप में विकेट आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है राइटी और बैटर को. एंगल भी कट ऑफ करता है. आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस. You can ball those Yorkers as well, a little more well. And if you want to ball Yorkers on your leg stump as well, it's a good angle. I mean, I don't know why a lot of ballers don't do it. It's a very good defensive way to ball in T20 cricket. I won't recommend it like, this is like the right line to ball or something of that sort. But obviously एक अच्छा ओवर यहाँ पे तुषार देशपांडे का. I mean, let's be honest, जिस तरीके रन रेट जा रहा था, I mean, he's really brought it back to an extent with this good over. अभी 2 बॉल बचा है. But yeah, it's again, trying out different things. आपको क्या लगता है, सिमरन, not having Pati Rana, Deepak Chahar and Mustafizur has really affected this team? नाउ आई थिंक आई एम थिंकिंग कि इफेक्ट कर रहा है थोड़ा सा. अतिराना का कमी महसूस हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक, राइट? बिल्कुल. और मेरे को लग रहा है कि मुस्तफिजुर का भी, क्योंकि उन दोनों ने अच्छे पार्टनरशिप में बॉलिंग किए थे पूरा टूर्नामेंट में. दीपक चहर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि दीपक चहर हैज बीन ऑन एंड ऑफ, बट पति राणा ऑन. स्पेशली. एंड oh, that's another good shot here. I mean, brilliant from Shubman Gill. I mean, let's be honest. I mean, he's just taking on the bowling apart here, and he's showing that what he can possibly deliver. And this peak Shubman Gill we're talking about. और एक मैसेज सेलेक्टर्स को भी जाएगा कि दिस इज व्हाट आई कैन डू. सेलेक्टर्स, आप भी देख लीजिए मेरे को वर्ल्ड कप में क्यों नहीं पिक किया है. एंड क्यों नहीं? आई आई थिंक दिस इज अ मैसेज टू देम एज वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड दिस ऑलवेज वर्क्स. जब आप राउंड विकेट बॉलर को लेग स्टंप के ऊपर से मारते हो ना, तो इतना जी आसानी से जी आप आउट करते हो. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक इट्स अ गुड ओवर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम. आई मीन, if you look the way in which the run rate was going, this is a good over in terms of context of the game. I mean, थोड़ा सा मोमेंटम खींचा है इन लोगों ने. बट 190 अंडर 15 ओवर्स, अभी भी 5 ओवर बचा है. 5 ओवर में आई प्रेडिक्टेड 5 ओवर्स 240. वो दैट इज क्वाइट पॉसिबल हियर, सिमरन. आई थिंक 50 तो बन जाएगा. आई जस्ट री रूट. आई एम गोना से 260.
Yeah, I think I'll stay with 250. 250 I think बन जाएगा. I don't know. 260 भी बन Okay, यहाँ सकता पे है. एक predictive question है. Can Gujarat Titans score 220 at the end of 17 overs? If they score 220 at the end of 17 overs, I'm saying they're going to score 260 at the end of 20 overs. So अभी wicket 10 wicket बचा है, and they look very good. 5 overs, death overs, we're just leading there, and both of the batters are in 90s, and I don't think they'll play for milestones here. Both are looking really good. Both are looking to take on the opposition as well. Look at this, right? I mean, Gujarat Titans on the cusp of elimination, and they're possibly producing the best performance of this entire tournament here. Yeah. अभी तक जितना भी मैच हुआ है उसमें गुजरात टाइटंस का आई थिंक ये बेस्ट इनिंग्स रहा है, राइट? अभी जो खेल रहा है वो. जी बिल्कुल बिल्कुल. I think Yes. they can also score their highest ever score in their IPL history as well. मतलब अभी तक तो Yes. highest तो 220 है शायद, 215 220 है. I think they can score their highest ever total in their IPL history. But no अभी one दो can साल ही beat हुआ है इस SR. टीम को आके, बट हाँ. नो, आई Yeah. एम टॉकिंग अबाउट गुजरात का हाईएस्ट स्कोर. क्योंकि Yeah. गुजरात का अब तक तो 2 साल में 220 शायद है, मेरे को पता नहीं. इफ यू गाइस कैन करेक्ट मी एज वेल ऑन द कमेंट्स, व्हाट डू यू Yes. थिंक इज द हाईएस्ट स्कोर गुजरात हैज स्कोर्ड. अगर कुछ 220 के आसपास है. अभी नया फ्रेंचाइज, ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दिस फ्रेंचाइज हैज बीन देयर फॉर 17 years. But yeah, 518 runs this IPL for Sai Sudharsan here. Incredible IPL for him. I love watching him bat. I mean, 518 runs. We're talking about a player who's just played what 3 matches for India, and outstanding. For me, he's been one of the best players to watch. And Gill again. Yes. Gill has had a very ordinary IPL thus far, but today he's showing it. क्या लगता है इस ओवर में सेंचुरी आएगा कि नहीं? एक का सेंचुरी आ जाएगा इस ओवर में. बिल्कुल. और शार्दुल ठाकुर के पास गया. I mean, 191 at the end of 15 overs. I mean, Shardul Thakur has been their best bowler tonight. If you look in terms of economy as well, Shardul Thakur has got this magical way of picking up wickets. Full toss में कभी कोई विकेट मिल सकता है इसको, और विकेट तो विकेट ही है. Doesn't matter how it comes. And Shardul Thakur has got that ability to do it. Or else it's going to be a massive over, because with Gill, he's got that ability. He's a guy who aims for these kind of moments, and that's a wide, I believe. Or does it touch anywhere? Oh, it's touch his leg, Uh, I believe. I think धोनी will say no. मत ले. रिव्यू लिया है कि नहीं? नहीं लिया नहीं है. नहीं नहीं. बाहर था. धोनी ने कहा कि नहीं यार पूरा बाहर है तो नो पॉइंट. ऋतुराज was very tempted to go for the review. Even Shardul wanted it, I believe. अच्छा बॉल यहाँ पे. आई मीन, लो फुल टॉस में कहूंगा, बट काफी क्लोज लगा मेरे को सिमरन वो. क्योंकि क्या पता कि अंपायर कॉल हो सकता है लेग स्टंप में जाके गिरने का. रिप्ले में देखना चाहूंगा, क्योंकि इट वाज वेरी वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ वेयर द बॉल हिट, बिकॉज बॉल जस्ट swirled in. I thought the ball was going away, but the ball just swirled in slight bit, which I think is very interesting in terms of where the ball is hit. Oh, that's So risky run there, but yeah. Oh, that was close though. both Yet another are overthrow, and that's a double. 95. Incredible. जी बिल्कुल. I mean, this is just beautiful to watch. But let's see. I दोनों का mean, रन. this is going to be very interesting end to the over. Shardul has been bowling these Yorker as well thus far, and they've set a very interesting field as well. क्या पता कि, I'm just expecting another big shot coming from Gill's bat this over, and that could Yeah. also get him to 100. I mean, Gill as a captain, how do you rate him, Simran, thus far? I mean, though they are last in the table, but Gill as a captain, how do you see? Yeah, he's trying his best, I think. Like he's a very good player, first of all. और जी टाइम के साथ साथ he'll gain the experience और धीरे धीरे I think um, he can be the. I think he's a very responsible player. First of all, I think I like that about him. और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ वो अच्छे कैप्टन भी बन जाएंगे. No doubt he is, but right now I think he is like lack of experience. जी बिल्कुल. यहाँ पे एक बहुत अच्छे ओवर शार्दुल का. I mean, he's kept things very tight. He's had a very good game. If you look, the best bowler for CSK tonight has been Shardul.
and he's kept both of them quiet this over, not a single boundary yet. And there's still, and this is a 195 run partnership we're talking about, guys. I mean, that's incredible. I mean, we talk about IPL stats. This is one for the greatest IPL opening stats ever. Let's be honest, that is right out. Both are batting on 96 or 47 or 96 or 40, 48 here. And Shubman Gill here has an opportunity to possibly get to his 100 as well. Who knows? This could be the ball where he gets to his 100. Oh, that's a leg by, I believe. Oh, that's a good over. I mean, excellent over from Shardul Thakur here. 6 runs of the over. I mean, exactly what you would have wanted as well in terms of just getting things back in track for CSK. But yeah, if they would have had a big over here, maybe the score would have really gone over the roof. But good comeback from Shardul Thakur here to keep things very quiet. And I also feel, they both are reaching 100. I hope 100 is not playing in their mind. It'll be really, really bad if they both are playing for the 100 year, because they will have to put the team first. There's a great opportunity for them to score even closer to 250 here. So they'll have to maximize. I think 250 ban jayega to CSK will be out of the game, I believe. Though it's possible to chase, but I would still give Gujarat 80-60% chance to win that. यस बिल्कुल। और होम ग्राउंड पे चेस करना कोई दूसरे टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। आई नो चेन्नई फैंस है वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज्यादा गुजरात को, इफ यू कैन सी ग्राउंड पे, तो चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि if CSK has to chase any score down, who will be the main player to watch out for from them? और ऋतुराज। Oh, yeah, Ruturaj. And I would say, I would also go on to say Rachin Ravindra. या थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा है वो, तो या हाँ, पर I would say Rachin Ravindra क्योंकि इतना बड़ा स्कोर है, like you need someone to like take the attack on. Ruturaj, yeah, he can score runs. ऐसी बात नहीं है कि he is also someone like a Gill or a Sudarshan, वैसे टाइप का ही प्लेयर है. But if you have to ask me, if you are chasing something really big, you need someone to score at a very fast rate as well. और उसी हिसाब से मैं रचिन को चुनूंगा, पर यू नेवर नो, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स. रचिन भी प्रेशर में रहेगा क्योंकि he is coming after a slump of form. He was dropped out of the team as well. So for him to come good, he'll have to really perform well, perform out of his skin, as one would like to say. So, or here, one of the most interesting thing about tonight's game is also that, as I mentioned, Gujarat are on the cusp of elimination. आपको लगता है गुजरात का अभी भी चांस है क्वालिफिकेशन का? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, पर हाँ, आप बोल सकते हैं कि नहीं. अगर आज गुजरात मैच जीतता है तो किस किस टीम को मैच हारना पड़ेगा तब जाके गुजरात जाएगा, डिपेंड्स ऑन दैट, राइट? या और गुजरात ये भी चाहूंगा कि आरसीबी भी हारे और दिल्ली भी हारे, और दे विल बी जस्ट होपिंग अ लॉट ऑफ टीम्स लूजेस, बिकॉज़ उन लोगों का नेट रेट काफी बुरा है इस वक्त क्योंकि if you look at RCB, I think RCB have really climbed up in terms of net run rate. If Chennai lose tonight, I see that game, RCB Chennai to be a knockout, and that's also provided that RCB wins against Delhi as well. So because then dono teams 14 के लिए लड़ेंगे, or it'll be also net run rate which will come into play. But you never know, it's IPL. IPL has always gone down to the last day to decide who's going to qualify, and that's the beauty of IPL, isn't it, Simran? अंतिम दिन तक पता नहीं है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगे लास्ट टीम के लिए, स्पेशली फॉर द फोर्थ स्पॉट. यस यस डेफिनेटली। एंड डू यू थिंक कि यहाँ पे गिल थोड़ा सा प्रेशर पे आ चुके हैं, जब भी और 4 रन बाकी बाकी है उनका 100 बनाने के लिए? आई लगता थिंक तो है मेरे को क्योंकि और टायर्ड भी लग रहे हैं मेरे को दोनों, गिल और सुदर्शन, क्योंकि काफी दौड़ा भी है, और सेंचुरी बिल्कुल प्ले करता है, बट दे कांट लेट इट bring down net run. They have to keep going here because this is a very important stage in the game, क्योंकि this will be the difference between them winning or losing. एंड इट्स Oh, 100। that is a brilliant 100 here from Shubman Gill. प्रेडिक्ट तो किया था एक सेंचुरी आ रहा है, पर शायद दो भी आ सकता है. Brilliant from Shubman Gill. Brilliant from Shubman Gill. Captain आई तो Gill. गिल का पहले आएगा सेंचुरी। Yeah, and you predicted as well. Gill Kapari, 50 balls, 100, strike rate of 200 here. And a great message here for all the Gujarat fans as well. He sent out saying that believe in the captain Gill.
And then what 100. I mean, he's played a lot fearlessly. You knew. आज तो शुभमन गिल का दिन लग रहा था पहले बॉल से. I mean, the shots he played, you knew this guy was going to score big. And once again, a century in the Ahmedabad ground. Brilliant player, Shubman Gill is. And Now it's here, time once for again, yeah. Sai Sudharsan as well to take the attack on, I believe. आपको क्या लगता है? आई मीन साई सुदर्शन भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा ना? अभी तक एक भी हाँ ये सेंचुरी नहीं मिला है उसको आईपीएल में. is is बिल्कुल. और I still think, Shubman Gill, he was very animated as well celebrating this 100. And he knows it. He knows it. This is such a big 100 for him because there was a lot of question marks on him as a batter as well. मैं ऐसा भी रिपोर्ट पढ़ा कि they should drop Shubman Gill the batter. I mean, हमारा social media is everything. social media So is great. Sai Sudharsan भी काफी cool लग रहा है मेरे को. He looks very calm, very composed. He looks like he Yeah, knows what he's doing. yeah. Doesn't have to tell much. He knows exactly what he can do. And Samarjit Singh, he bowled well last game, but he's going to be under pressure. It's a different challenge altogether. Bowling to two. It's a 100th century in the IPL history. Brilliant. That's just a single again. I But think Shubman Gill, शुभमन गिल थोड़ा सा प्रेशर में बहुत ज्यादा सीरियस फेस लग रहा है आज दूसरे दिनों से आज उसका फेस थोड़ा ज्यादा सीरियस लग रहा है व्हाट डू यू थिंक काफी राइट ज्यादा फोकस लग रहा है मेरे को आज. हाँ, काफी फोकस लग रहा था. आई थिंक ही जस्ट वांटेड इट. आई मीन दैट्स व्हाट आई लव फ्रॉम शुभमन. व्हेन ही इज, आई रिमेंबर एक मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, टेस्ट मैच था शायद, सेकंड टेस्ट में वाइजैक में. Like he looked like he wanted that 100. Which जब भी Shubman Gill wants it, I believe he's the kind of player that he can get it as well. वैसा टाइप का प्लेयर है. हंगर यस नजर में आता है. और if you look, it's such an important uh, you know uh, face of the game as well. That's a brilliant shot, but just a single again. Good bowling here from Chennai. Like defensive bowling, काफी अच्छा कर रहा है Chennai Super Kings अभी भी. Like bowling two good Yorkers, and they're trying to try to take the game on. And this is where it's going to be very interesting. Both Sai and Shubman should know that they can't let the guard down, and that's 100 from Sai Sudarshan as well. Incredible here, incredible from Sai Sudarshan. Outstanding. I mean, let's be honest. This is just quality stuff. Two players scoring 100. मैं विराट कोहली और एबी डिविलियर्स का देखा था ऐसा एक पार्टनरशिप. गुजरात के खिलाफ था, funnily enough. और I mean, incredible from these both. Lovely to watch. जडेजा इज What क्रेजी crazy, incredible. एक ताली तो चाहिए बनता है इन दोनों के लिए. Incredible partnership, 209 runs. And Sai Sudarshan, what a guy. He's not even celebrated it. Can you see that? बंदा का पहला 100 है. He's just raised his bat and he's looked like, guys, outstanding, man. This guy is winning my heart with every match. वेरी काम वेरी कंपोज्ड यस Very calm. I mean, इसने बस thumbs up दिखा है. सिमरन, can you believe? वहां पे like, I'm not saying you shouldn't celebrate or something like that, but पहला 100 है आपका और एक thumbs up दिखा के उसको पता है the job is half done and such a big game. That's maturity. या Outstanding from Sai Sudarshan. ही नोज हिज वर्थ कि इससे ज्यादा मतलब कहीं और बड़ा वो रन करेगा और सो सोच लीजिए सिमरन है कि पिछले बार आईपीएल में 96 में था बंदा, आईपीएल फाइनल में मिस आउट हुआ था सेंचुरी में. और he plays for Tamil Nadu in the Ranji Trophy as well, from Tamil Nadu against Chennai, scoring 100. What a story! I mean, outstanding from Sai Sudharsan. Love watching him bat, man. यस लव वाचिंग इन Incredible. ग्रेट अभी प्लेयर अभी एक और सिंगल यहाँ पे 210 at the end of 17 overs. Guys who predicted 220 at the end of 17 overs, maybe you can reroute that. And let's go to 250 at the end of 20 overs. I think 251, 17 overs. I think that's a possibility as well. 250 at the end of 17 overs. At the end of 20 overs, आपको क्या लगता है? Oh, that's a catch. And I think that's a first wicket which is gone. I mean, that's a first wicket. I hope that's not no ball Yeah, I hope to not. No ball हो सकता. yeah क्या लगता है? No ball है कि नहीं?
No, no, no. No, I don't think that's a no ball. It was Okay, that's the definitely first. Yeah, Hota. that was not a no ball. That was not a no ball. That was not a no ball. And so that is a brilliant 100 from Sai Sudarshan. Great knock. And that's the first wicket of the game as well. And what a knock from Sai Sudharsan. What an incredible knock. 103 of 51 balls played out of his skin today and showed the worth. किसको भेजेगा? मैं अभी तो डेविड मिलर को भेजूंगा बोल के जाके तोड़. मिलर ही आएगा आई थिंक. मिलर को ही आना चाहिए अभी भी. And I think it's great stuff thus far from the thus far they've done a great job in terms of the way they've scored. And I think if David Miller can give them the finish, कुछ 10 बॉल में 20-30 रन बना के, and that'll be exactly what they would want. या यस अभी अभी सी 210 बनाए राइट और बॉल बाकी इधर 4 और 16 बॉल बाकी राइट 16 बॉल. जी बिल्कुल. डेविड मिलर आ चुका है. आई थिंक बड़े शॉट खेलने के लिए भेजा गया है उनको. देखते हैं कि कितना बड़े शॉट लगाते हैं अभी. और गिल डेविड अभी मिलर के थोड़ा सा पास, आई मीन डेविड मिलर के पास वो गेम भी है कि ही कैन प्ले दो शॉट्स. एंड गिल को भी यहाँ पे आई थिंक मोर देन डेविड मिलर गिल को अटैक ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि गिल इज द मोस्ट प्लेयर हु स्पेंड मोर टाइम इन द क्रीज नाउ. एंड उसको पता होगा कि क्या करना है. एंड या सो दैट इज वेयर आई एम साई ट्राइंग टू से. साई सुदर्शन ने अभी तक एक भी गंदा शॉट नहीं खेला और पहला गंदा शॉट खेला उसमें वो आउट हो गया. जी बिल्कुल बिल्कुल. और प्रेशर में बड़े शॉट मारने के लिए जा रहा था क्योंकि if you look at the situation as well, it's been that you have to go at every ball. And Abhi bhi Gill, I mean Gill will have a job to do. It's not yet done. You have to give them the finish as well. Possibly get as much runs as possible here. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा यहाँ पे गिल का. I mean outstanding in terms of the game क्योंकि they have really pulled things back. अभी 2 और बॉल बचा है पर still just talking from the context of the game, such a brilliant over. थोड़ा सा मुश्किल हाथ गेंद आप देखोगे तो फील्डर के हाथ में ही दे रहा है. इसके पहले 3-4 ओवर में 100 के पहले जब वो 80-82 में तो हर एक बॉल गैप पे जा रहा था चाहे वो गैप इतना छोटा ही क्यों ना हो. हर एक बॉल गैप के बीच से निकल के जा रहा था. जी अभी बिल्कुल. आई डोंट मेरे को लग रहा है पिच भी थोड़ा धीमी तरीके से स्लो हो गया है मेरे को लग रहा है. Coming out from dressing room as well. जी आप और आप कोशिश कर लीजिए कि क्या कर सकते हैं. बट brilliant in terms of the way in which how things have gone thus far for Gujarat Titans. I mean, I've put a question 250 and बन पाएगा कि नहीं. अभी भी बन सकता है. Let's not write anything off. 2 ओवर बचा है and if David Miller can play a good finish, 250 is still a possibility. And I think, let's be honest, that's up in the air, and I think that's a wicket. That is a wicket. That's a big wicket again. I mean, in terms of, I was just talking about, uh, in terms of what has happened, I think so far it's been outstanding. Outstanding from Shubman Gill. What a phenomenal way. What a phenomenal end to a great knock from Shubman Gill. क्या लगता है? What did you make of it? Yes, ये विकेट आई थिंक ये विकेट गिरना ही था. व्हाट डू यू थिंक कि अभी बॉल अगर बाहर नहीं जा रहा है आपसे तो विकेट आना ही था आपका. जी बिल्कुल. I also feel थोड़ा प्रेशर में आया था शुभमन गिल पर हाँ, at the end of the day, if this is a brilliant knock, शाहरुख खान आया बैटिंग करने and they would know that they'll have to give a good finish here. I think डेविड मिलर के ऊपर रहेगा बहुत कुछ. If David Miller can score in the next 2 overs something big, काफी अच्छा हो सकता है finish. और अगर रन नहीं बन रहा है तो विकेट भी आ गया और आपने आपका जो काम है ना आज पूरा किया राइट. जो भी काम जी था बिल्कुल. एज अ ओपनर इससे अच्छा आप काम नहीं कर सकते. पूरा खेलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है कि आप 20 ओवर खेल रहे हो आप उसमें डबल रन सिंगल रन ले रहे हो. आप छक्का मार रहे हो 4 मार रहे हो और फिर उसके बाद आप कैप्टन भी हो राइट. तो थोड़ा सा प्रेशर जी बनता बिल्कुल. है यार. 17 18 जी ओवर बिल्कुल. में आउट तो या यू हैव डन योर जॉब.
and Yeah, absolutely. और pretty well. आज का काफी important गेम भी है if you look from GT perspective as to they're almost on the cusp of knockout and they know that they have to win this at any cost. और मेरे को लगता है आज राशिद खान का भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा स्पेशली फॉर द गुजरात टाइटंस इफ दे हैव टू विन। नूर अहमद का भी रहेगा क्योंकि अभी Yes, पिच थोड़ा धीरे आ रहा है and if you look their ball well, CSK has been bowling well, their Yorkers are landing well, and they would know that from here on it's about how you really try to restrict the GT team. 215 here, that's exactly the score which GT scored in the IPL final. But care, its time is done and gone. It's 1 year later. We're talking about it. It's not an IPL final, and Sai Sudharsan also was able to complete the unfinished 100, which he was unable to do in the IPL final. पर हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ पे शार्दुल को कुछ डिफरेंट तरीके से खेलना चाहिए, मे बी थोड़ा रैम्प रैम्प लेके आए? uh, यहाँ पे नया बैटर है, थोड़ा वैरायटी अगर ट्राई कर सकते हैं शार्दुल तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछला जो भी बैटर था उनके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ही कैन ट्राई समथिंग एल्स। थोड़ा सा फुटोस दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अवे बैटर को अगर खेलेंगे करने में कोशिश करेंगे तो आई थिंक विकेट आ जाएगा, और ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करेंगे तो विकेट आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल। और तो आपको मेरे को लगता है लगता कि है टू जी फिफ्टी जी बनेगा? जी 250 तो मेरे को मुश्किल लग रहा है अभी, क्योंकि काफी अच्छा कमबैक हुआ है अभी सीएसके की तरफ से। दे बॉल्ड रियली वेल, दे बॉल्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। पेस भी काफी कुछ पेस नहीं दिया है, एंड इस ओवर में भी 3 बॉल गया है एंड जस्ट बीन लाइक 3 रन्स इन 3 बॉल्स। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जॉब। 240 भी काफी मुश्किल लग रहा है, 230 में ही मेरे को लग रहा है अभी अच्छा, खत्म हो जाएगा गेम। पर पता नहीं, अभी 3 बॉल बचा है, लेट्स सी if Shahrukh can give a good flourish. Shahrukh is known for giving this flourish. If you look last 12 balls, just 15 runs. So this is where I'm talking about, right? Great defensive bowling from CSK. जो भी कहे हम, फर्स्ट 17 overs में काफी ordinary bowling रहा है CSK का। पर if you look at the last 12 balls, they've really bowled well and they've really looked like they can do a job. And Shardul Thakur especially here. I mean, he's been the pick of the bowlers for me. Outstanding from Shardul Thakur. यस। एक बॉल डॉट हुआ है यहाँ पे, जो कि इस जी जी। टाइम पे होना चाहिए था, इस लेकिन ओवर में 2 डॉट बॉल्स आया है एंड इट्स लाइक थ्री बॉल्स, 3 runs just off 4 balls, and it's just brilliant from Shardul Thakur. I mean, he's kept his composure. काफी मेच्योर भी लगा मेरे को आज जिस तरीके से बॉलिंग किया। उसको पता है कि दो यस, सेटल्ड बैटर्स है, बट ही वाज नॉट स्कैर्ड। दिलेरी से बॉलिंग किया, वुड लाइक टू से सो। एंड वो भी अच्छी बॉल, वंस अगेन और अनदर यॉर्कर। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पे शार्दुल ठाकुर से। आई मीन 217 हियर, वी वर टॉकिंग अबाउट 250s and 60s। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कमबैक फ्रॉम सीएसके। But if you look, one more ball remaining and another over to go as well. So you never know. Anything is still possible. But if you look, I still think Matthew Wade को बेच सकता था ahead of a Shahrukh Khan, क्योंकि Matthew Wade is known for finishing games as well. यस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 230 से ज्यादा नहीं बनेगा, 230 ही बनेगा। जी जी, 230। 230 भी काफी बड़ा स्कोर लग रहा है मेरे को इस वक्त। पर हाँ, good over from Shardul Thakur. 219 is what GTR, and at this point, they would know that they would need a big finish here. पता नहीं, आई मीन पिच भी काफी स्लो हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इफ ड्यू डजंट कम इन, GT will be very happy. They're using the long boundaries really well at this point. The bigger pockets, they're bowling according to the field. Longer side of the ball में short डालने की कोशिश कर रहा है। They're not, they've changed the length. Balled either Yorker or short without any pace, and that really worked there. या और वैसे ही बॉलिंग लोगों को करना चाहिए था पहले भी, बट nonetheless, अभी भी अभी तो टाइम है। सी आपको क्या लगता है, सीएसके चेज कर खेल रहा पाएगा है, कि नहीं? और मुझे ऐसा लगता है कि जीटी को पता है कि सीएसके के पास ऐसे बैटर है कि ये चेस कर ले 230 240 तक, तो कर सकता है। जी जी बिल्कुल। आई मीन देखिएगा तो पिच काफी स्लो रहा है अभी पिछले कुछ ओवर्स में, बिकॉज बॉल इज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट इफ यू लुक। और पेस भी काफी चेंज करने की कोशिश की सीएसके के बॉलर्स ने। मे बी दिस कुड बी गुड न्यूज इवन फॉर द जीटी बॉलर्स, इफ पिच रिमेन्स स्लो, यू नेवर नो। या
लेट्स सी जीटी first बॉलर्स one. क्या कर। यहाँ पे तो 220 हो चुका है और 5 बॉल बाकी है। कितना आएगा 5 बॉल में, क्या लगता है आपको? कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अभी स्क्रीन पे? अभी 230 का questions are still there. Can 242 be scored? But I think 231 मैं कहूँगा. It's a possibility. Can just go to 31. क्योंकि in one end if you look, 231 is a very good score. And अभी एक streaky 4 कहूँगा. Exactly kind of luck चाहिए था जीटी को थोड़ा बहुत. They've got a streaky 4, 224 में है अभी. 4 बॉल अभी भी बचा है. 4 balls, 16 runs is possible. If 4 balls, if they can get 16 runs, that is 240 what we are talking about. एक बैटर बना सकते हो तो डेविड मिलर ही है, क्योंकि डेविड मिलर के पास वो एबिलिटी है, क्षमता है कि ही कैन स्कोर दोस 16 runs of 4 balls and he's got the ability to do it. क्या पता आपको को लगता है कि 4 बॉल में 16 रन? नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इट्स अ वाइड, बिग वाइड। या इट्स अ बिग आइडिया. एंड वो पिच के बाहर तो नहीं गिरा है. मेरे को लगा कि पिच के बाहर गिरा था तो नो बॉल भी हो सकता था, पर हाँ, लेट्स सी. आई मीन इट्स प्रेशर में होगा सिमरजीत सिंह, क्योंकि सिमरजीत सिंह हैड अ वेरी गुड गेम लास्ट टाइम अराउंड. आज का मैच में 54 रन्स के लिए गया है 3.2 ओवर्स में. ऑब्वियसली आईपीएल इज सच अ गुड लेवल. एक मैच बहुत अच्छा जा सकता है, अगले मैच में बहुत सारे रन्स भी पड़ सकता है, वैसा कि एक टूर्नामेंट है आईपीएल. एंड यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट. या और मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से सीएसके ने बॉलिंग किया है, मेरे को लग रहा है कि इस जीटी के पास भी वो क्षमता है. मतलब इफ यू लुक, मोहित शर्मा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली चेंज ऑफ पेस वगैरह. मोहित शर्मा हैज अ गुड गेम डिफेंसिव बॉलिंग में. आई थिंक सीएसके कैन हैव, जीटी कैन हैव अ गुड गेम बिकॉज पता नहीं कौन सा डीआरएस क्यों लिया अभी. ओह, पिच के बाहर गिरा है ये बॉल। वही डीआरएस लिया है। या बॉल के लिए नहीं मिला, छोड़ो, जाने दो भैया। अभी 4 बॉल में कितने वही रन बनाने? वही अभी फ्री नहीं रहेगा, पर हाँ वाइड तो रहेगा ही. इट्स अ सो गुड। या सो दैट्स व्हेयर आई थिंक वाइड के लिए चैलेंज कर सकता है शायद ये भी. बैट के ऊपर से था बॉल। हाँ मेरे को लग रहा है. और he stood also outside the off stump if I'm not wrong. So that's where I personally think this could have been a little more different in terms of how GT should have approached the last few overs. And they have challenged it. They have challenged it interestingly. देखते हैं क्या होगा. uh, I believe अभी देख के पता चलेगा. I mean if it's a wide or not again. मिलर खड़ा ही है ऑफ स्टंप पे, राइट? मिडिल ऑफ स्टंप पे He was खड़ा standing. खड़ा। जी जी. और If you look, he has balled it right across. And that looks like it was outside the reach. ऐसा लग रहा था मेरे को. क्या पता शायद वाइड हो सकता है ये. नहीं नहीं, आउट, अवॉइड नहीं दिया। नहीं दिया. नहीं। इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग डिसीजन, क्योंकि दोनों तरफ पल सकता था ये, क्योंकि आई ऑल्सो फेल लाइक इट वाज आउटसाइड हिज रीच. बट either way that's up in एंड the इट्स air and I think मिस। that's ये drop that's a मिस। drop that's a drop. Yeah, that's another drop. But काफी अच्छा ओवर रहा ये भी. एंड आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू जीटी. ऑल ऑफ अ सडन रन रेट काफी नीचे आया है. मे बी आई डोंट नो इफ इट्स स्पिट स्लोइंग अप or whatever it is. If Dew doesn't come in, I mean, it looks like again a slower ball, which the ball did stick onto the pitch quite a lot. हाँ, पिच मुझे स्लो नहीं होने लगता. का थोड़ा सा कम आया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा ये कि ये जो भी सेट बैटर है वो अगर चले जाते हैं ना तो फिर रन रेट कम हो जाता है। और इधर अंपायर के जी जी बिल्कुल. अंपायर के सर के ऊपर क्या लग रहा है? That's funny. I mean, either ways. मेरे को लगा कोई कैमरा वैमरा है, कोई एंटीना है, पर हाँ. But there was a small fly which was on top of the umpire, on top of KS Anand Padmanabhan.
But here it has two more balls to go, guys. Can David Miller finish it off with two sixers here? That would be ideal for the Gujarat Titans to get David to Miller a, out of form. I don't know why, या but कुछ it's लग ही नहीं रहा है. I mean 230. See, W 231. Yeah. 230 पहुंच गया है. So can they finish it off in a high? 235 to 36 would be good. That would be ideal for them at this point of stage as well. Especially when it comes to, with the kind of start they had, पिछले 5 ओवर में सिर्फ 40 रन आया है. Simran, I think that's a very good comeback from CSK. If you look, CSK. they looked good in the first 15 overs, the Gujarat Titans, but पिछले 5 ओवर में रन रेट तो नीचे गिरा है, और that's going to Mm-hmm. be slight of concern. एंड देखते हैं. आई मीन Yeah. ऑब्वियसली सीएसके भी प्रेशर में रहेगा इस मैच में, क्योंकि इफ यू लुक, दैट्स अ गुड शॉट. एंड कुछ नहीं, एक ही रन आया है. एंड दे विल कम बैक फॉर टू, एंड दैट्स अ रन आउट. 232 चाहिए सीएसके को जीतने के लिए. आसान तो नहीं रहने वाला. इट्स ऑब्वियसली अचीवेबल फॉर श्योर. बट क्या लगता है सिमरन, चेस कर पाएगा कि नहीं? आई एम सेइंग जीटी विनिंग टुनाइट. मैं जीटी का जीतने का चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो हो गया है, बॉलर भी है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं. नूर अहमद इज वेरी गुड स्पिनर. और जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी का चांसेस है, लेकिन अ, पूरा पूरा अगर आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल भी चांसेस नहीं है सीएसके का, ऐसा भी नहीं है. सीएसके का भी जी जी इट्स लाइक 60-40, 60-40. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. And whoever had predicted about 230 being scored, you're absolutely right in terms of your prediction. And that's about it from us for tonight in terms of the first innings. Thank you, Simran. We had good fun talking about the game. We had great fun watching some incredible batting from Shubman Gill and Sai Sudharsan as well. Hopefully join you all soon, and do not forget to download the ByStars app wherever you're watching this, and keep playing the fantasy and the predator contest as well, because this is for you all. We'll have a lot of fun playing this, a lot of fun enjoying this IPL season with ByStars as well. Thank you, Simran, and have a good time, all of you. See you all soon. Bye bye. Thank you. Good night. Bye. Good night. Good night.